Good morning, students. I hereby welcome you all to a live session, yet another live, where we'll be catering to the module of speaking in IELTS. So just stay tuned and let's get some more viewers to join in, and then we'll begin after a minute. All right, students, let's get started with it. So, we'll today be talking about how to get Band 9 in IELTS speaking. Many of you, the most dreaded part of the module is basically about how to comfortably conversate with a stranger. Because basically, what is happening is that you are being made to talk to a stranger. So, this is where, the pressure builds up and nervousness dives in. So, what can be done in order to master in this module so that you are confident enough to deal with this module? All right, let's move on and see what we have in our today's live session. All right, first of all, before beginning with this module, we need to understand that how the examiner is going to judge your speaking. Okay, this is very important. What is the basic judgment criteria that the examiners are going to follow, on the basis of which they are going to mark you, they are going to score you? So there are four different band descriptors, or you could say parameters, on which the framework of your scoring is laid. These four are fluency and coherence, lexical resources, grammatical range and accuracy, pronunciation. Now, what do we have in fluency? Fluency means that the speech, that the content which you are dispensing out to the examiner should be fluent enough, should be smooth, there should be a flow, a natural rhythm, as if you are, the language, this English language for you are being tested with, that is your own. You take it as a language in which you're comfortable in. So that would gradually build up your fluency. And coherence definitely means priorities. The priority of the content that you are speaking out should be well laid. All right, there should be relevance in the content which you are speaking. That is coherence. Now, if I talk about lexical resources basically means vocabulary. Vocabulary now doesn't mean that the vocabulary has to be very fancy or of very high level. That is not required. All right, no doubt. All right, it is, you will definitely be having an edge over if you have really extensive and high range of the vocabulary, the upper, you fall under the upper spectrum, where you are comfortable, easygoing user of the language, and difficult and heavy words. But even if you're not that, still you must know the vocabulary that is appropriate, based on the content, on the topic of your speaking. If it is about part 1, you have to be directly hitting the target, you have to be answering the
exact question that is being asked and nothing else. You don't have to beat around the bush. You don't have to be extensive in your part 1 with as far as general questions are required. So there is a coherence, a relevance, everything has to be in line, the proper topic related vocabulary, that is lexical resources. Now grammatical range and accuracy is nothing but grammar, how well, how perfect, how accurate, how efficient you are in the structures of the grammar, in all the parts of speech, let it be nouns, pronouns, verbs, tenses, adverbs, prepositions, demonstrators. Each and every part of speech is very important, and the accuracy is being tested. And what is grammatical range? Grammatical range means that the different types of sentences which you could use in order to enhance, in order to show your capabilities to the examiner, that all right, you are very well aware of the different kinds of sentences and are a flexible user of the same. Now let's get on to pronunciation. Pronunciation means what? The way you are pronouncing the words, the way you are pronouncing the syllables, the alphabets, the consonants, the vowels. So all that falls under pronunciation. The pronunciation, जिस तरीके से आप किसी भी word को बोल रहे हैं, उसकी correct pronunciation is very important. For example, our is our, it's not R. If you say R, that would be HOUR. So this is just an instance where I showed you how and when you can also get more bands in your pronunciation and less also. So please be cautious about whether the word that you are pronouncing is apt or not, whether the pronunciation is correct or not, because maybe over the years in your entire schooling you might not have been pointed out on the incorrect pronunciation that much, because there is the Indian curriculum is syllabus based, all right, and such intricacies, itni choti choti details, they do not get into that. So maybe because the pronunciation of your teacher was incorrect, so it is going on and on and on. But now, as you know, you have to deal with IELTS, and one of the parameters that you are being judged on is pronunciation. So students, please make sure each and every word that you emit from your mouth, that you speak, that you say is correct. You're pronouncing it correct. Now it is not pronunciation. For example, let me give you another example like I gave of ours. Now here some people would pronounce it as pronunciation. No, it is not pronunciation, it is pronunciation. So maybe you've been hearing this word as pronunciation from the since inception, let's say since beginning, in your schools, in your colleges, everywhere, in your friend circle, in your immediate network, in your social circle, but that is not the correct pronunciation, so be sure. So these 4 parameters are critical. You have to prepare for your speaking to get to that band 9, keeping in mind all these 4 parameters: the fluency and coherence, lexical resources as in vocabulary, grammatical range and accuracy, efficiency, as well as the kind of sentence structures that you use in, and the pronunciation means the correct way to speak a particular word or an alphabet or consonants or vowels out. So these 4 have to be very mindfully handled. Now understanding responses. Now in this today's live session of our students, I am going to show you that एक स्टूडेंट है जिसके 5 से 6.5 के बीच में बैंड्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऑलराइट. एक स्टूडेंट है जिसको 7 और 9 के बीच में है उनका बैंड स्कोर, एंड उसने अपना स्पीकिंग का पूरा मॉड्यूल, वो कॉन्वर्सेशन विद एन एग्जामिनर, उसने किस तरीके से हैंडल किया होगा कि उसको 5 to 6.5 के स्पेक्ट्रम में फॉल करना पड़ रहा है, एंड जिसने 7 to 9 बैंड स्कोर किए हैं बिटवीन दिस रेंज द स्टूडेंट इज फॉलिंग, उसने किस तरीके से अटेम्प्ट किया होगा. Let's see. Now if I talk about part 1, as you know, because this live session of ours of today's is how to get to that band 9. So that basically means the do's and the don'ts. So I deliberately am not including in this the basic format of speaking. You could comment in the comment section below. Let me know if you want the entire speaking module, the basics to be cleared out. So just to brush it up quickly, I would reiterate to you that part 1 is about introduction, your personal introduction, and general questions. General questions, those are based on the everyday context, the social context, based on you, your preferences. So this is
nothing about a lot of rocket science. No, no, nothing is involved. It's very basic, it's very simple, it's related to you and your immediate surroundings. So पार्ट वन में जिसने 5 to 5.6.5 की जो रेंज में फॉल करता है वो किस तरीके से आंसर करेगा, वो मेमोराइज्ड आंसर्स देगा. नाउ यू नो जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं उसके टॉपिक्स जो होते हैं दोज आर काइंड ऑफ प्री डिफाइंड ऑलरेडी. ओके, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स है, टेली कम्यूटिंग है, एडवर्टाइजिंग है. सो दोज आंसर्स कैन बी मेमोराइज्ड. ऑलराइट, कुछ लाइंस होती हैं जो आप बोल सकते हैं इन ऑर्डर टू आंसर फॉर दोज क्वेश्चंस. सो जो बच्चा 5 to 6.5 की कैटेगरी में फॉल करता है वो हमेशा मेमोराइज्ड आंसर्स देता है. अब उन मेमोराइज्ड आंसर्स की रेशियो फ्लक्चुएट कर सकती है, वेदर वो सारा का सारा मेमोराइज्ड ही बता रहा है जो उसने लर्न किया हुआ है वो बोल ही हो रहा है, या फिर वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, थोड़ा सा अपना इनपुट दे रहा है, थोड़ा सा. मेजॉरिटी ऑफ दोज आंसर्स आर मेमोराइज्ड. सो दिस विल टेक अवे योर बैंस. This will make you be at somewhere between 5 to 6.5. Now, second mistake that the student would make is very long answers. Now, part 1 is short, all right. जब आप IELTS की प्रिपरेशन करते हैं, you're made familiar with the speaking modules, you're made familiar with the rounds, how many rounds and how many parts of speaking are there. You're very well made aware of this thing that part 1 has to be precise. The answers have to hit the nail, and you do not have to talk about going into the details of everything, going into the development of your answers. No, that is not required in part 1. So you don't have to be very lengthy in your answers when it comes to part 1. You have to be precise and accurate. Third mistake, off topic. Now, if the question is that are youngsters using internet more nowadays, and you start to say that I use internet, I use Facebook, I use Instagram, I use Snapchat on the internet for 2 to 3 hours a day. So you went entirely off topic. The question was something general, alright, and you made it specific to yourself, and you even went into the detailing that okay, I use these apps. So this is, this would deduct your bans. The next attempt, the next kind of mistake that a student falling into this category would make is they sound very formal. Now, this ये जो गलती है, I would not rather entirely blame the student for this. The whole structure is to be blamed. The system is to be blamed. Why? Why do I say so? Because what happens is जब आप IELTS की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ट्यूटर के पास, किसी ट्रेनर के पास, तो you are constantly fed with this notion that okay, no, you have to be very formal. It is a professional and it is a very official kind of matter that is going to happen in the speaking module of yours, and वो examiner है, आपको ये करना है, वो करना है. It is not required. The more formal, the more strict, the more closed and rigid you get, the less tendency is for you to be at ease. ओके जितना आप अपने आप को स्ट्रिक्ट और रिजिड करोगे उस टाइम पे, उतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग ओके, देन जो चीज़ें आप कर भी सकते हो नर्वसनेस की वजह से, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से, जो आप बोल भी सकते थे वो भी आपका चला जाएगा. Okay, so you don't take it as a pressure, just take it as a normal conversation with someone who's a stranger. But definitely you do not have to be disrespectful and go over the board and be extra friendly with the examiner, but you also at the very same time do not please be very formal. That is not required. Okay, that would make you feel like a machine, a robot. You will be restrictive in your behavior, in your mannerisms. So that is not required. Definitely these 2 points are interrelated. If you're very formal, if you're very mindful, if you're very as if you
you are being pounced upon by someone, तो आप definitely robotic भी हो जाओगे, because ease is gone. So don't do that. Next mistake that the student would make in part 1 is lose coherence at times. Now, at the beginning of the live session, I told you that I explained it out. What is coherence? Coherence is priority wise, relevance wise, okay, how you are framing your content. So जो coherence है, जो logics, reasoning, relevancy, priorities, एक sequence that need to be followed in order for you to stick to the topic, to be in line, उसको बोलते हैं coherence. और अगर आप उसको lose करते हैं, you are not gonna be in the spectrum of scoring a 9 band. The next mistake that the student would make is use repetition and self-correction. Yes, some students are in the habit, they are not consciously doing it or deliberately doing it. It is happening maybe because then again the system is to be blamed during their schooling, during their previous coaching or tutoring. They have been made used to this kind of technique to, keep repeating things, keep reiterating things, and this is the way they may be used to memorize stuff and all. रेपिटेशन करना, बोल बोल के याद कर करके पढ़ना, तो वो उनके अंदर वो चीज़ सेट हो जाती है. जब वो दूसरी लाइन स्टार्ट करते हैं, वो पहली लाइन के कुछ लास्ट के वर्ड्स या कुछ मे बी एक वर्ड लास्ट 2 to 3 वर्ड्स, 4 मे बी सम हाफ ऑफ द सेंटेंस स्टूडेंट्स दे रिपीट इट. So this repetition is gonna cost you. It is gonna cost you your bands. Do not do that. Once you have explained something, once you are done with the sentence, leave the sentence. You have to start with a fresh sentence. Self-correction. Now self-correction, if it is occasional, it is, understandable. Okay, I see that I have made a mistake grammatical, maybe because of a slip or a tongue, or maybe because I was not my focus shifted to something more important. But this correction should not be at every 2 to 3 words, at the interval of 2 to 3 words, or maybe half of the sentence. So this self correction has to be, there has to be a pace of it which must sound very natural. इसको natural sound करना चाहिए जो self correction आप करते भी हो. So you have to take care of this thing. Now अगर किसी स्टूडेंट के बैंड 9, 8 आए हैं, उसने कैसे अटेम्प्ट किया होगा अपना पार्ट 1? Such a student feels like a normal conversation. Now do you see, first and the most important thing, आप पार्ट 1 में जस्ट आपने स्टार्ट किया है, ओके, यू हैव स्टार्टेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर, बट इट मस्ट साउंड लाइक अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन. आपको उसको स्ट्रेसफुली नहीं करना है. स्ट्रेसफुली अगर आप करोगे, आई ऑल्सो एक्सप्लेन इट टू यू, आपका कंफर्ट लेवल चला जाएगा. अगर आपका कंफर्ट लेवल चला गया है, अगर आप उस टाइम एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली द एग्जामिनर विल नोटिस दैट. और वो उसके नोटिस में अगर आएगा, वो ये नहीं फील करेगा कि आप फॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं. उसको लगेगा आप उस लैंग्वेज से, इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है. आप चीज़ों को मेमोराइज करके आए हैं, आप चीज़ों को बहुत प्रिपरेशन से आए हैं. नो डाउट प्रिपरेशन हैज़ टू बी देयर, बट द प्रिपरेशन हैज़ टू बी अबाउट and overall the bigger picture of this language. Okay, now अगर आपकी मैनरिज्म्स में, आपके जेस्चर्स में, आपकी टोन में, आपकी रिदम में अगर उसको फील होता है कि न बहुत ज़्यादा यू नॉट कॉन्फिडेंट enough, okay, so that examiner will take it as a negative sign, and this examiner is definitely going to keep you somewhere between 5 to 6.5. So make it a normal conversation. Start it as if you are having a conversation with someone at a coffee shop, with some random stranger. He or she is asking you questions, you are answering them. It's just that. So जब आप स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन आइल्स की, आप इसी तरीके से करें कि आपको सी स्पीकिंग इज़ फ्रॉम 11 to 15 minutes, ऑलराइट. सो 15 मिनट इंग्लिश में बात करना इज़, ट्रस्ट मी, नो बिग डील. इट्स नो बिग डील. बट वो प्रेशर जो है, वो 9 बैंड्स का प्रेशर, वो आइल्स को के बैंड्स लाने का प्रेशर, वो एक एग्ज़ाम प्रेशर, इन्वायरमेंट, स्ट्रेंजर, स्ट्रिक्ट, आपके इंस्ट्रक्शंस आपको ट्रेनर्स की तरफ से, इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, दैट इज़ व्हाट मेक्स द सिनेरियो वर्स्ट.
So don't rigidly follow things. Take it as a normal 15-minute conversation with a stranger. Answers question directly. Yes, पार्ट वन में क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू डू नॉट हैव टू एक्सटेंड योर आंसर्स. प्लीज़ यू हैव टू. अब ये कोई स्टूडेंट है जिसको 8 बैंड्स 9 बैंड्स मिले हैं, दैट मीन्स उसने अपनी एक नेचुरल पेस मेंटेन करके रखी है. जो पॉजेज हैं, जो हेजिटेशंस हैं, जो यू कुड से दैट सेल्फ करेक्शन है, दैट इज़ वेरी ओकेशनल. All right, and it is very natural and it is flowing. It is flowing. Everything is just in flow in proper synchronization. Nothing is as if it is injected. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उस चीज़ से फीड करके भेजा गया है और आप उसको यू आर रीगरगेटिंग थिंग्स आउट, आप उसको बस बाहर निकाल रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. एवरीथिंग इज़ रियली नेचुरल विद अ स्टूडेंट, विद अ कैंडिडेट हु इज़ गेटिंग 8-9 bands. So developing their answers enough but not going off the topic. Okay, so yes, answering the questions directly is important, but ये जो development है, अगर ये student develop करता भी है अपना answer depending upon the need of the question, it would never be off the topic. It would be topic constraintive. It will be restricted to the topic. So this student will never be off the topic, and the repetitions are rare, the self corrections are rare. वो कभी कभी होंगी, बीच में होंगी. It will be very rhythmic, it will be very natural. So these are the differences that will make a student score stay somewhere around band 5 in part 1 and uplift the students towards band 8 and 9. You have to take care of these things. You don't have to be formal, you don't have to be robotic, you don't have to be repetitive. No correcting yourself again and again. So these are basically, see, maybe you do not have to it is not that band 7 8 9 लाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा normal conversation, but yes, definitely band 8 9 लाने के लिए आपको ये तो बिल्कुल नहीं करना है. This is a cross. No memorized answers, no long answers, no off topic, no being very formal and rigid, no being repetitive, no being doing self corrections every now and then. Okay, so let's move on and see कि part 2 में जिसके band 6 आए हों उसने किस तरीके से आंसर किया और जिसके band 9 आए हैं उसने कैसे आंसर किया. Okay, band 6 के स्टूडेंट ने क्या किया, rigidly follow किए bullet points. Now this point will make you think कि yes, हमें हमारे ट्रेनर ने, हमें हमारे इंस्टीट्यूट में कहा जाता है कि बुलेट पॉइंट्स को आपने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. एम आई राइट? आपने हर बुलेट पॉइंट का आंसर देना है, कोई बुलेट पॉइंट मिस नहीं करना, अदरवाइज आपके बैंड्स डिडक्ट होंगे. नाउ लेट मी शो यू द ट्रूथ. ओके, लेट मी टेक यू बैक टू दिस. डू यू सी वॉट आर द बैंड डिस्क्रिप्टर्स एंड द पैरामीटर्स जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे. यहाँ पर कहीं भी कंटेंट नहीं है. ओके, यू आर नॉट बीइंग स्कोर्ड, excuse me, you're not being scored very rigidly based on the content. Okay, now that doesn't mean कि आप content पे focus ही नहीं करेंगे, आप off topic बोलेंगे एंड आप कोहरेंस लूज़ कर देंगे. देर इज़ अ पैरामीटर कोहरेंस जो है बेसिकली रिलेटेड टू द कंटेंट ही होता है, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी वेरी रिजिड अबाउट द कंटेंट. उससे क्या प्रॉब्लम होती है, लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट स्पेसिफिकली आउट टू यू, बिकॉज ये बहुत स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं और कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्पीकिंग जो बैंड्स है, ओवरऑल स्पीकिंग स्कोर है, वो ड्रॉप हो रहा है, वो अपलिफ्ट नहीं हो रहा है. आप क्या करते हो, उसमें हो सकता है कुछ एक आध बुलेट पॉइंट हो जिसका आंसर देने में आप कंफर्टेबल नहीं हैं. अब अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपकी ओवरऑल जो आपने एक 2 मिनट्स के लिए बोलना है, कुछ ऐसा बोलना जिसमें आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आप हेजिटेट कर रहे हो, रुकोगे, पॉजेस लोगे, उसकी बजाय जो बुलेट पॉइंट्स के आंसर्स आपको आते हैं, जस्ट गो विद दैट एंड यू कैन ऐड द कंटेंट ऑन. It is not and nowhere stated in the exam IELTS exam pattern of speaking module कि आपको उन्हीं बुलेट पॉइंट्स के बारे में पर ही बोलना है, उसके अलावा आप कुछ बोल ही नहीं सकते. इट इज़ nowhere written.
सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट. अगर आप उसमें से जो बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ बुलेट पॉइंट्स स्किप भी कर रहे हैं, तो आप अपने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के उसके बारे में. बट उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपकी फ्लुएंसी ब्रेक नहीं हो रही है, आपकी प्रोनाउंसिएशन ब्रेक नहीं हो रही है, आपने उसमें वोकेबलरी ऐड करी है, ग्रामर आपकी रेंज है, वोकेबलरी अच्छी है, फ्लुएंसी है, कोहेरेंस, आप जो बोल रहे हो रेलेवेंट बोल रहे हो, आपके बैंड्स नहीं कटेंगे. ट्रस्ट मी ऑन दिस. This is a big myth that is being there in this IELTS industry. It is not at all uh, necessary to answer each and every bullet point, and that too in sequence. Yes, I have heard this many times from many students of mine that हमें तो ऐसे कहा था कि इनके आंसर जो है सीक्वेंस में वाइज ही जाने चाहिए. येस, सीक्वेंस वाइज इस तरीके से बोला आप कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं वो रेलेवेंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हेन एंड वाई, व्हेन एंड व्हाट, सॉरी, ओके, व्हेन. नाउ अगर उसने पूछा कि लेट्स से talk about the longest journey you had. Now अब पहला जो बुलेट पॉइंट है दैट इज आस्किंग यू व्हेन एंड वेयर. ओके, सो दिस इज ऑब्वियस कि जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे, जब आप अपने क्यू कार्ड को फ्रेम करेंगे, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में तो ये आएगा ही कि आप वो जर्नी जो आपकी लॉन्गेस्ट जर्नी थी वो कब थी, ओके, और कहाँ गए थे आप. सो जो चीज़ें लॉजिकल है वो लॉजिकल है, बट दैट डजंट मीन कि आप इतने ज़्यादा उस चीज़ का स्ट्रेस ले लें कि इसका आंसर मैं आप क्या बोलूँगा. लाइक फॉर एग्जांपल मेनी स्टूडेंट्स यू नो दे फेस प्रॉब्लम इन कि हाउ यू फील अबाउट इट, ओके, हाउ यू फील अबाउट इट, और स्टिल सो इन क्वेश्चंस में उनको प्रॉब्लम आ जाती है. हाउ यू फीलिंग, वो मे बी दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स, बट यू कैन डेफिनेटली जिस बुलेट पॉइंट पे आप कंफर्टेबल नहीं हैं आप उसको स्किप करके अपना कोई एडिशनल बुलेट पॉइंट ऐड करके. नाउ दैट डजंट मीन कि आप अपना जो 1 मिनट का प्रेपरेटरी टाइम है उसको आप लूज़ कर दें वहाँ पर क्वेश्चन अपने नोट पैड पर बुलेट पॉइंट ऐड करने में. दैट डजंट मीन दिस. इट मीन्स बेसिकली दैट add on information and that will make you score a band 9. You will not lose points at all. The main idea is कि आपको उस topic के बारे में, for example if the examiner is seeking the information of the longest journey that you've had in your past, so keep talking about that, your longest journey. Those bullet points are just a help or a hint that the examiner wants you to frame those answers in that very way. So that doesn't has to be strictly or rigidly followed at all. Okay, hopping on to the next mistake that a student that makes a student stick to band 6 is they run out of ideas. This is a big flaw and nothing can be done about it. इस चीज़ को आप अपने प्रैक्टिस से ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आपके रिलेटेड ही क्यू कार्ड्स होते हैं जिसमें योर चाइल्डहुड मेमोरी, पर्सन यू इंस्पायर, पर्सन हु इज़ योर फेवरेट फैमिली मेम्बर. सो इट इज़ मोर अबाउट, येस पिक्यूलियर भी आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट योर फेवरेट बुक, फेवरेट ऑथर, favorite political character, let's say, favorite monument, favorite building, favorite city. So if you run out of ideas, no, that would be creating a real mess for you, because the demand of part 2 definitely is that you have to speak for 2 minutes. It cannot be less than that. Okay, so you need to be very mindful, very cautious that you do not run out of ideas. Have a good reading practice. Try to be in the strategy of reading more and more cue cards every day, 5 cue cards. You go through at least 5 different topics of general questions each day with your practice, and the follow-up questions also must be immediately studied and read after once you have prepared with your cue card. So read more and more and more, because these ideas is what you're going to be requiring at your examination day. And if you fall short of those ideas, if you have nothing to talk about, if you nothing to speak, then what will your examiner score you for? So please do not run out of ideas. Have a good bank of ideas. Be in the practice of brainstorming. Believe in idea generation. That are your ideas, not always spoon fed by the trainer. All right, so you have to practice this well. All right, hesitates.
Now, such a student who is somewhere in the spectrum of 5 to 6.5 definitely hesitates because he or she is not comfortable in the language. उसको पता है कि मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे नहीं आती हैं, और उन चीज़ों को छुपाने छुपाने के लिए वो जो हेजिटेशन यूज़ करता है, वो जो पॉजेज यूज़ करता है, वो दोज आर वेरी कमिंग आउट अप फ्रंटली, दोज आर वेरी ऑब्वियस. एग्जामिनर उसको झट से पकड़ लेता है कि इफ़ दिस पर्सन इज़ हेजिटेटिंग अ लॉट, that is the the practice, the preparation has been faltered somewhere or the else. Repetition, yes, इसमें भी repetition. If you, let's say, sometimes student, there are some kinds of students who made repetition in terms of like they keep repeating their sentences, the last 2 to 3 words, 4 words, like as I told you. And some kind of students are who they do not even get to know while they are speaking that they are, वो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं. Okay, so this is also falling under the category of repetition. Bring variety in your ideas. अगर आपने एक आइडिया की बात कर ली है, अगर तो आपको दूसरा, आपको जो सेकेंड आइडिया यू आर टॉकिंग अबाउट हैज़ टू बी फ्रेश. नो रेपिटिशन, और आप उसको स्ट्रेच मत करें एक ही चीज़ के ऊपर बार बार बोल के. जो एक चीज़ ने आपने हमने जो स्टेटमेंट, जो आइडिया यूज़ किया है, दैट हैज़ बिन क्लियर इनफ, रेलिवेंट इनफ, उसने अपना पर्पस, मोटिव सॉल्व कर दिया है. एग्जामिनर को कन्वे हो चुका है कि आप उस आइडिया को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, उसको समझ आ चुका है. देयर इज़ नो नीड टू कीप ऑन रिपीटिंग. उसको लगेगा कि आपके पास और आइडियाज़ नहीं हैं, एंड वी डू नॉट वांट दैट. सो प्लीज़ एट नो कॉस्ट repeat yourself. Okay, so a last mistake that a student scoring a band 6 would do is complex communication causes fluency problems. Now what happens is that let's say okay, questions you're being fed with a cue card in your part 2, right? So what happens is जब आप अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज यू नो कि आपको ग्रामेटिकल रेंज यूज़ करनी है, जब आप अटेम्प्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, तो आपको फ्लुएंसी में प्रॉब्लम्स आ जाती है, बिकॉज आपका ध्यान चले जाता है इसमें कि मैं करेक्ट बोल रही हूँ या इनकरेक्ट हूँ. उसकी वजह से आपका फोकस शिफ्ट होने की वजह से आपकी फ्लुएंसी जो है हैम्पर हो जाती है, एंड दैट इज़ एविडेंट. एग्जामिनर को वो दिख जाता है, एंड वो आपको कभी भी 6.5 से ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा. Okay, so practice enough. Practice will definitely make you perfect in using the different kinds of sentence structures, in having a complex kind of content for you to give to the examiner on the platter. Alright, now let's see वो जो स्टूडेंट है जिसको बैंड 8 मिले हैं, उसने किस तरीके से पार्ट 2 अटेम्प्ट किया है. उसने फोकस किया है मेन टॉपिक पे. दिस मीन्स डेफिनेटली बुलेट पॉइंट्स तो उसने पढ़े हैं, उसने एक आइडिया ले लिया है कि ओके आई हैव टू टॉक अबाउट दिस 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 एंड दिस, बट उसका मेन फोकस मेन टॉपिक पर है. उसका मेन फोकस टॉपिक किस पर है? द लॉन्गेस्ट जर्नी दैट यू हैड टिल डेट. तो लॉन्गेस्ट जर्नी को एक्सप्लेन करता हुआ उसके जो भी माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, दिस स्टूडेंट विल कीप ऑन सेइंग दोज आइडियाज़. This kind of student is not very rigid, very strict about the bullet points, और उसको बार बार उसको देखकर पॉजेज लेकर फ्रेम करने की, आंसर करने की कोशिश वो नहीं करेगा. इट विल बी वेरी नेचुरल, एंड जो आंसर है वो बहुत ही वेल कोहेस्ड होगा, वेल बाइंडेड आंसर होगा, और कोई भी उसमें हेजिटेशंस या लॉन्ग पॉजेज, बिकॉज अगर आप देखो हर बुलेट पॉइंट पे स्टॉप करके उसको दोबारा बुलेट पॉइंट को देखोगे, उसका आंसर दोगे, डेफिनेटली पॉज आ जाएगा, आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, एंड पॉजेज एंड हेजिटेशंस एंड रेपिटेशंस वो दैट आर गोना कॉस्ट यू. स्पीक नेचुरली अबाउट द मेन टॉपिक फॉर 2 minutes. यस, सो बेसिकली अगर आप 2 minutes के लिए बोल पा रहे हैं, दैट शोज कि आपको आइडियाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू नॉट लैकिंग इन योर आइडियाज़, यू हैव इनफ कंटेंट टू टॉक अबाउट, एंड मे बी द एग्जामिनर हैड टू स्टॉप यू. So this kind of strategy is required, and this would definitely happen if you have a good knowledge base, if you have read enough. तो आपको content और ideas अपने आप दिमाग में आने लगेंगे.
यूज़ बुलेट पॉइंट्स टू हेल्प देम स्पीक नेचुरली। यस, ये मैंने पहले पॉइंट में ही क्लियर कर दिया था कि इस स्टूडेंट का मेन फोकस जो है वो मेन टॉपिक पर है, बुलेट पॉइंट्स पर। यस, ही और शी हैज़ गिवन अ क्विक रीड कि मुझे इन चीज़ों की बात करनी है, बट दैट स्टूडेंट इज़ नॉट वेरी बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट के ओके मुझे इसी क्वेश्चन का आंसर देना है और मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। उसको पता है कि मेरा मेन टॉपिक ये है और मुझे इस टॉपिक के ऊपर आई हैव टू स्पीक फॉर 2 minutes। नाउ सच ए स्टूडेंट इज़ एफर्टलेस टू अंडरस्टैंड। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा तब होगा जब आपने अपनी ग्रामर की रेंज में, उसमें सेंटेंसेस में योर वोकेबलरी इज़ एप्ट, आपने एक करेक्ट यूजेज की हुई, करेक्ट सेंटेंसेस बनाए हैं, सो डेफिनेटली यू विल बी एफर्टलेस टू अंडरस्टैंड आपकी, क्योंकि मिस्टेक्स कम हैं। जितनी मिस्टेक्स आपकी कंटेंट में जो आप बोल रहे हो ज़्यादा होंगी, उतना ही मुश्किल होगा आपको समझना, बिकॉज एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आप कहना क्या चाहते हो। सो इन ऑर्डर टू मेक द एग्जामिनर अंडरस्टैंड रियली वेल, यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेज। Hesitation is content related rather than to find words or grammar. Yes, इस चीज़ का मैंने आपको पहले भी विद एग्जाम्पल क्लियर किया है दैट जो हेजिटेशन रहती है इस स्टूडेंट को जो बैंड 8-9 ला रहा है, वो कंटेंट के रिलेटेड ज़रूर आ सकती है। मे बी उसको उस चीज़ का आंसर जो है वो फ्रॉम द बैक ऑफ हिज और हर मेमोरी उसको लाने में, उसको रिगरगेट करने में, उसको रिप्रेजेंट करने में वो फ्यू सेकेंड्स, अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का ज़रूर आ सकता है पॉज, या यू कैन से दैट अ ब्रेकेज ऑफ अ लिंक। बट ये हेजिटेशन जो है वर्ड्स को फाइंड करने में बिल्कुल भी नहीं होती, ग्रामर करेक्ट है या नहीं ये देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। इस स्टूडेंट के पास एप्ट वोकेबलरी है, उसको पता है कि इंग्लिश में इस वर्ड को क्या बोलते हैं, उसको पता है कि अगर मैं ये टेंस यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, मेरे मेन वर्ब्स क्या हैं, मैंने कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ लगानी है। दिस स्टूडेंट इज़ वेल वर्स्ड विद द बेसिक्स, विद द ग्रामर, विद द लेक्सिकल रिसोर्सेज। जो हेजिटेशन है वो कंटेंट के रिलेटेड हो सकती है, लेकिन ग्रामर और वोकेबलरी, लेक्सिकल रिसोर्सेज की रेंज, एक्यूरेसी, कोहेशन, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, इन चीज़ों को लेकर कोई हेजिटेशन नहीं है। एंड एज आई टोल्ड यू दैट कंटेंट का पैरामीटर स्पीकिंग के मॉड्यूल में नहीं है। सो इतनी हेजिटेशन इज़ नॉट अ मैटर ऑफ बॉदरेशन फॉर द एग्जामिनर। ही और शी, जो आपका एग्जामिनर है वो आपको बैंड 9 दे देगा अगर आप कंटेंट के रिलेटेड थोड़ी सी हेजिटेशन शो करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3। नाउ पार्ट 3 में जिस बच्चे को 6 अराउंड बैंड्स मिले हैं उसने बहुत शॉर्ट आंसर्स दिए होंगे। Yes, this is a problem. You need to understand that part 1 general questions का short होता है और part 3 जो है that is a extensive round. It is a round where you are being judged on how well you are able to develop your answers, how well you are able to go to the extremities to touch the heights and be in the depths at the same time. You're being judged with that. So very short answers are a big no in part 3. आपको कम से कम 5-6 लाइन्स का आंसर देना चाहिए। 4 से लेस तो बिल्कुल भी नहीं, 4 लाइन से लेस तो बिल्कुल भी नहीं पार्ट 3 में। ओके, नाउ दैट अगेन डजंट मीन कि आप अपने बोलते वक्त अपने सेंटेंसेस काउंट करने लग जाए, बिकॉज जितना आप प्रेशर लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, आपकी बाकी के पैरामीटर्स ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखें कि ये जो पार्ट 3 है इसमें मेरे को लेंदी आंसर्स बोलने हैं। जो टाइम मैं कंज्यूम कर रहा हूँ या कर रही हूँ इनके आंसर्स देने में पर क्वेश्चन, दैट हैज़ टू बी लॉन्गर देन दैट ऑफ द जनरल क्वेश्चन, दैट उस जनरल क्वेश्चन राउंड के आंसर्स जो हैं। सो येस, वेरी शॉर्ट आंसर्स आर अ बिग नो इन पार्ट 3 ऑफ योर IELTS speaking. Now, a student जिसको कम बैंड्स मिले हैं उसने एक और गलती की हो सकती है कि उसने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं। दिस मीन्स व्हाट? क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड है, उसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स या टिपिकल, नॉट आई मीन टू अ ग्रेटर लेवल, बट थोड़े से, अब क्योंकि डिफरेंस है जनरल क्वेश्चंस में और फॉलो अप के क्वेश्चंस में, तो हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया हो और आपको उसको समझने में प्रॉब्लम हो गई। आपने एक बार सुना, आपको समझ नहीं आया, यू अगेन आस्क द एग्जामिनर टू रिपीट द क्वेश्चन। आपको फिर से वो क्वेश्चन सुन तो गया है प्रॉपरली, बट
एग्जैक्टली समझ नहीं आया है कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो आप क्या करोगे, या तो देर आर टू ऑप्शंस आफ्टर दैट, या तो आप छोड़ ही दोगे, आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, या फिर आप इनकरेक्ट अटेम्प्ट दोगे। तो इनकरेक्ट अटेम्प्ट देने पर यू गॉन ऑफ द टॉपिक, एग्जामिनर विल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड गेट टू नो दैट यू, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट था क्वेश्चन को समझने का, वो गलत चला गया है। सो डेफिनेटली आपके बैंड्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। वांटेड टू बी ओवर। नाउ व्हाट डज दिस मीन? जो स्टूडेंट है, यू नो पार्ट 3 योर स्पीकिंग, होल ऑफ द स्पीकिंग लास्ट्स फॉर अबाउट मैक्सिमम 15 मिनट्स। सो ये जो पार्ट 3 है, यू आर ऑन योर मे बी ऑन योर मिनट 12th 13th 14th 15th. Now some students are exhausted by this time because maybe they are not comfortable with the language that much, extensive user नहीं है उस language के, frequently नहीं इस language में converse करते हैं, so उनको problem is by this time they are very exhausted and they want things to just get over and they want that मैं इतना ज़्यादा लेंदी उसको ना करूँ, और they seem to be less interested and just want to get out of that room and be released with the pressure, exam pressure that they are being pounced upon. तो वो दिख जाता है एग्जामिनर को कि आप चाहते हो कि बस जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो और मैं बाहर जाऊँ। सो ये जो एक बॉडी लैंग्वेज से, आपकी आपकी टोन से, आपके जेस्चर से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके काइंड ऑफ आंसर से, द एग्जामिनर विल बी ईजिली एबल टू मेक आउट दैट यू वांट थिंग्स टू बी ओवर क्विकली, एंड देन अगेन योर बैंड स्कोर विल ड्रॉप। यस, रेंज इज़ लिमिटेड। आप चीज़ों को जब कवर करने, फॉलो अप के आंसर्स जो हैं दोज आर एक्सटेंसिव, दोज आर लेंदी। नाउ आप उतनी रेंज ऑफर करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, आप डिफरेंट एरियाज़ को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच नहीं कर पा रहे हो, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो इस केस में यू विल नॉट बी एबल टू गो बियॉन्ड 6.5। uses vocabulary with limited flexibility। अगेन जो वोकेबलरी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसमें दिख रहा है एग्जामिनर को कि आपने वो जो वर्ड्स यूज़ की, लर्न किए हैं, मे बी उसकी आपके पास इनफ प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स एवरीबडी परफेक्ट, दिस इज़ अ फैक्ट। अगर आपको कोई वर्ड बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो गए उस वर्ड में, आप उसको अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सिनेरियोज में कंफर्टेबली यूज़ कर पाते हो, बट अगर आपको इनफ प्रैक्टिस नहीं है तो आप लिमिटेड वर्ड, लिमिटेड सेंटेंसेस में उसको यूज़ करोगे, और मे बी हो सकता है वहाँ पर भी आप फॉल्टर कर जाओ। सो येस, बी वेरी यू नो, have a good practice of your vocabulary, make sentences when this I will give you a short strategy of for this, for having a good vocabulary bank on everyday basis. लेट्स से आई डोंट एडवाइज यू गाइज टू यू नो आप 10-15 वर्ड्स, 20 वर्ड्स दिन के लर्न करें, उनके वर्ड मीनिंग्स, नो, डोंट डू दैट, यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन, दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल प्रोसेस। वॉट यू कैन डू इज़, आप दिन के चाहे 2 वर्ड्स पिक करो, चाहे 3, चाहे एट द मैक्स 5, डोंट डू मोर देन दैट। आप उन 5 वर्ड्स के मीनिंग लिखो और उसके 5-5-10 एक वर्ड के 5-5 सेंटेंसेस बनाओ, सो दैट वर्ड बिकम्स योर ओन। आप इतनी प्रैक्टिस उस वर्ड में कर लें दैट उसकी यूजेज में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दैट इज़ हाउ ग्रेजुअली यू शुड बिल्ड योर वोकेबुलरी, एंड यू नो नॉट जस्ट कीप ऑन क्रैमिंग वर्ड मीनिंग्स एवरी सिंगल डे। आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको वो वर्ड सारे के सारे याद नहीं रहेंगे। अगर तो आप रोज़ रोज़ उनको लर्न कर रहे हो, रोज़ रिविजन कर रहे हो, रोज़ एवरीथिंग यू आर डूइंग इट, एंड यू कैन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू फॉलो दिस रिजाइम। वो इस चीज़ को नहीं फॉलो कर पाते हैं कि पहले 10 वर्ड्स, वो 15-20 वर्ड्स जितने भी वो लिख रहे हैं पहले लिखें, लर्न करें, अगले दिन नए 20 वर्ड्स लिखें, पुराने वालों को भी रिवाइज करें, नए वालों को भी लर्न करें, ये पॉसिबल नहीं है। सो बेटर है कि आप हर रोज़ कम वर्ड्स पिक करें, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली ऑलरेडी आपके अंदर जा चुके हैं, दोज वर्ड्स यू हैव मेड योर ओन। So this will make you to have more flexibility as far as your lexical resources, as far as your vocabulary is concerned. Okay, now let's see कि band 7 to 9 का जो स्टूडेंट था उसने
किस तरीके से अटेम्प्ट किया है? Okay, in part 3 what the student does is attempts every question. Yes, आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है. देन देर इज़ लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट इन दैट. जितने भी आप आंसर्स दे रहे हो उसको डेवलप कर पा रहे हो, डिफरेंट रेंज टच कर पा रहे हो, उसको इलेबोरेट कर पा रहे हो. उसमें आपको यू डू नॉट लैक आइडियाज़, यू डू नॉट लैक डिफरेंट prospects that you could possibly include in your answers. You're using all the range of structures, all the kinds of sentences very naturally, and there is no problem at all explaining the different aspects of your answer, of your topic that you've been being asked, being questioned on. And the vocabulary is also appropriate. There is precision, there is flexibility. So these are the kinds of attempts a band 5 to 6.5 student would make and a band 7 to 9 student would make. So definitely students, you have to keep all these things in mind so that you do not make the mistakes that a student scoring 5 to 6.5 made. And this will help you to at least understand what you should not do in your IELTS speaking. That's a wrap up for now. Thank you so much students for being with us, and do let us know if you liked the session, or any kind of feedback is welcomed. Thank you.